क्या आपको लीड कोड का वन ऑफ द इजिएस्ट प्रॉब्लम आता है? फाइंडिंग हाउ फाइंडिंग वेदर नंबर पैलिंड्रोम और नॉट। तो आज देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एक इंटीजर दिया हुआ है जो कि है एक्स, और हमें बस ट्रू रिटर्न करना है अगर ये पैलिंड्रोम है, और फॉल्स रिटर्न करना है अगर ये पैलिंड्रोम नहीं है। एक बार देखिए पैलिंड्रोम क्या है। एन इंटीजर इज अ पैलिंड्रोम व्हेन इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बेसिकली ये कह रहे हैं अगर वर्ड है, नंबर है 1 to 1, तो बेसिकली अगर आप शुरू से पढ़ेंगे फर्स्ट इज 1, देन इज 2, देन इट्स 1। उल्टा पढ़ेंगे तो भी इट इज इक्वल, पीछे से भी इट इज 1 to 1। एक नॉन पैलिंड्रोम का एग्जांपल हो सकता है मे बी 34। तो अगर आप सामने से पढ़ेंगे तो पहले 3 आता है, देन 4। बट अगर आप पीछे से पढ़ेंगे देन 4 आता है, 3, सो इट इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम। शब्दों में भी यही होता है। इंग्लिश का वर्ड ले लो या हिंदी का भी ले लो। इंग्लिश में जैसे MADA, राइट। तो सामने से पढ़ेंगे तो MADAM, और बैक साइड से पढ़ेंगे तो भी MADA, बस। ठीक है। तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, बट हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंटीजर जो कि है एक्स। तो इसके लिए जो मेन चीज हम यूज करेंगे वो होगा लूप, सॉरी माय बैड, नॉट लूप, इफ एंड एलिफ। एंड सेकंड चीज जो हम यूज करेंगे वो होगा स्ट्रिंग फ्लैग। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग कोड। तो पहले हमें जो ये एक्स है उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है एक्स इज अ इंटीजर, और इंटीजर को हम स्लाइस नहीं कर सकते। एंड देन सिंपल इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1। अभी मैं बताता हूँ क्या हो गया है। रिटर्न ट्रू एल फॉल्स। दैट्स ऑल, वी गॉट अवर आंसर। रन करके दिखाया था। ठीक है, ऑल द केसेस आर ट्रू। नाउ थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इसमें। मैं आपको कोड में लेके चलूंगा। इफ आई राइट एक्स इक्वल टू 2 और 12, and I want to, if I write x is equal to, let's say, mango, and what I want to do is slice the mango. So this is I will do it. So just print x starting point, start from 0, and give me the third number. Let's see what does it give. Just wait. Yeah, MAN. It has given us MAN. पहला जो जीरो इंडेक्स है वो है M, दूसरा है A, तीसरा है N। तो दिस इज हाउ यू स्लाइस समथिंग। बट जो हमने यूज किया है वो ये है कि हम रिवर्स स्लाइस भी कर सकते हैं, रिवर्स स्लाइस भी कर सकते हैं। इफ आई जस्ट राइट प्रिंट, ओके, आई विल राइट रिवर्स इक्वल टू एक्स, जो है उसको हमें रिवर्स करना है, सो वी विल जस्ट डू -1, दैट्स ऑल। मैंगो का उल्टा ओ जी वॉट एवर इट इज, दैट्स हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। लेट अस सबमिट। At beginner level we do not that much, worry about this, but after one more time submit, it might get changed.
That's all.